आई यूज टू बी दैट पर्सन जिसने इंडिया में कभी चाय नहीं बनाई थी. नाउ आई टीच पीपल हाउ टू ईट. सो यू कैन सी द जर्नी. और अभी आप इंस्टेंट कुकिंग की टिप्स दे रहे हो. एग्जैक्टली. सो यू कैन सी वो ये कोड भी है कि लाइक अगर किसी से सीखना हो ना कि यार ये काम जल्दी कैसे करना है, आस्क इट फॉर फ्रॉम द मोस्ट लेजिएस्ट Laziest पर्सन. आई एम person. दैट पर्सन व्हेन इट कम्स टू कुकिंग. Mm-hmm. So I figured out my own solutions. As I said, I didn't compromise on the result. Result क्या है? It should be tasty. It should be clean. But I figured out my own formula, which is easy, which is spending But less it has time. to be healthy on the same place. Yes. Healthy, tasty. यही दो factors होते हैं. बिल्कुल. Yeah. And तीसरा आप ले लो satiety. You should feel Yeah. full. Exactly. ऐसा ना लगे यार कि बना भी लिया, खा भी लिया, but मज़ा नहीं आ रहा. फुल फील नहीं कर रहे. Yeah, वो तो आएगा क्योंकि 80% आप whole foods खा रहे हो. फर्स्ट इज चिकन, मैरिनेटेड चिकन. Yeah. सेकंड. Same fish कर लो. Marinate तो Marinated आप कुछ fish. भी कर सकते हो. पनीर Okay. भी marinate कर सकते हो. बिल्कुल. Yeah. Same with vegetarian. Similar thing can be done with soya chunks as well. Soya chunks बनाने में कितना टाइम लगता है? पानी में डाला, वो boiled हो जाते हैं within like 3 or 4 minutes, and then or you can also air fry it. अभी last week की बात है. One of my clients, she made soya popcorn. सोया पॉपकॉर्न. उसने क्या किया, वो सोया चंक्स को थोड़ा पानी में डिप करके she added some masalas or seasonings into it. सोया के अंदर. सोया चंक्स जो हमारे वो जो ग्रैन्यूल्स आते हैं, न्यूट्रेला या न्यूट्रलाइट और या देयर सम ब्रांड या एंड उसको उसने एयर फ्राई कर लिया. सोया पॉपकॉर्न्स. You can learn anything and you can be master in it within like 10 to 12 hours. यस. ये इलॉन मस्क ने भी अपने किड्स के लिए कहा था कि लाइक आई Exactly. वोंट पुट देम इनटू एनी स्कूल और समथिंग. द राइट कंटेंट कंजम्पशन वो मैटर करती है कि लाइक व्हाट आर योर प्लेटफॉर्म्स, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडिंग विद. ये सब कंजम्पशन ही है. The people you are hanging out with, that's social consumption. The food you are eating, that's nutrient consumption. The content that you're watching, that's called as content Mental consumption, I would say. Mental consumption, yeah. तो वो सारा कुछ overall healthy होता है. There are different ways in your body, the way you are consuming things. What I would say is people right now in Canada, they are facing this problem of, depression, anxiety, stress. And when you talk to them about health and all these issues, Yeah. they are like, I'm not able to, do my basic things. I am into depression. I'm into anxiety. I'm not getting a job. And here you are talking about this, being healthy and eating good and, air frying things. It's not relevant to me. I asked them, one question. Is not able to expand your family not relevant to you? Is not feeling fit throughout your life, or to be able to walk properly when you are 50 years of age, is that not relevant to you? Would you enjoy being in a hospital at the age of 40 or 50 crying about your knees or these kind of things? Is that not relevant to you? You're just not thinking about the compounding effects of this negligence. Easy unhealthy रहना भी नहीं है. Easy, it's not easy to be like grow old before you are actually old, I would say. Easy तो कुछ भी नहीं है. So Choose your easy. Yeah. What's easy for you? Yeah. But ये Y factor, that's how life lessons and all everything evolves, But वही होता है कि जैसे elders हमको कहते होते हैं कि यार मेरे experiences से सीख ले तो अभी समझ जाएगा, नहीं तो you'll be at that situation when you'll be like कि अच्छा अगर वो situation वो तब advice समझी होती तो ऐसे होता. ठीक है, life has its own ways to teach you something. But if there is something which has enough of social proof outside कि यार ये ऐसे होता है.